who are responsible for what happened, or the party that was in power responsible. It was our neighbor. Neighbor has not accepted the accession of Jammu and Kashmir to India. Now, one more thing, please. Secondly, the biggest Qurbani, the party that gave is National Conference. Our leaders, our ministers, our small workers were killed. Let's not forget. For what? For holding this flag of India high. We have never denied that we are part of this nation. And we will remain part of this nation. But do justice to us. Do not point fingers at people who have suffered for this nation and continue to suffer for this nation. Thank you, sir. Thank you. I don't have to disagree with what you say. I think it's known to all, it's hardly any guarded secret that Pakistan never reconciled to Jammu Kashmir being part of India. I said that right in the beginning. But we are here not to discuss what Pakistan is doing. What we are here to discuss what we are doing. Is that facilitating Pakistan's mischief? एक बार एक सेमिनार हुआ था, के एफ रुस्तम जी जो हमारे डीजी थे सबसे पहले बीएसएफ के, वो आए, वहां पर भी यही बातें की गई. तो रुस्तम जी ने कहा, सर आई गॉट योर पॉइंट, आई एग्री विद योर, आई एग्री. I was the chief minister and I wanted a unified command because intelligence, every intelligence, whether it was BSF, whether it was army, whether it was the local police, whether it's CRPF, they were all separate. I wanted a unified command where one command would be there so that these intelligences could be put together and we could attack those areas firmly. What happened? First General, the Chief of the Army Staff, I would not name him, he didn't want it. It was with great difficulty that I convinced Government of India that we should have a unified command. Today, if your successes are there, it's because of the unified command I created for saving the nation, not only the state, but the prestige of the nation. Unified command itself once, K.F. Rustamji was given all these inputs, and you know what he said? He said, gentlemen, I have travelled all the way from Pune, because he was settled there after retirement, not to listen to what Pakistan is doing, but to understand what you are doing. So that is what I am saying. Let us introspect on our roles and confess to ourselves. I have not blamed an individual, but these are the facts, and I am glad that Dr. Saab is a very senior person. He has been inspired to give a thought to what was said. Again, now what has happened in 4 or 5 years? This is a repeatedly question asked by everybody. कि इस बार पहले क्या था, अब 2019 के बाद और अब का क्या फर्क हुआ? अब आप मुझे बताएं, भौगोलिक परिस्थितियां वही है जम्मू कश्मीर की, टोपोग्राफी भी कठिन है, जो उसकी नेचुरल जो कंस्ट्रेंट्स है वो भी वैसी ही हैं, व्यवस्थाएं भी हैं, फिर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि जो कल और आज में अंतर है. अब आप सिक्योरिटी की बात करते, स्टोन पेल्टिंग 0% हो गई. इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिफाइड कमांड में भी कहीं ना कहीं उस तरह से अमल नहीं हुआ करता था जिस तरह से होना चाहिए था, जो राज्यपाल शासन लगने के बाद हुआ, जब सीधे सीधे कमान गृह मंत्रालय के हाथ में आई. कुछ ना कुछ तो इसका जवाब देना होगा ना. ये तो एक केस स्टडी बनेगा. क्या कारण, ऐसा कौन सा जादू हो गया 4 साल में? सिविलियन और ओवरऑल किलिंग्स में 80-90% कमी हुई है. अभी आप कह रहे थे हम कश्मीर जाते हैं, पहले भी जाते थे, अभी भी जाते हैं, लेकिन भाई साहब अभी आप जाते हैं तो 150-2 करोड़ टूरिस्ट वहां पे है. पहली बार जम्मू कश्मीर में होम टूरिज्म शुरू हुआ है. मैं पूर्वोत्तर में रहा 7 साल, वहां होम टूरिज्म हमने शुरू करवाया था मेघालय में, क्योंकि होटल नहीं थे. जम्मू कश्मीर में होम टूरिज्म का कभी कल्चर नहीं था. डॉक्टर साहब तो इतना सालों से जान रहे हैं. इतना टूरिस्ट आया इस बार कि लोगों ने अपने दरवाजे किवाड़ खोल दिए, फिर भी उसकी गुंजाइश.
2.25 करोड़, तो ये अंतर आया है। और ये लोग इसीलिए आए, उन्हें लगा कि परिस्थितियां अनुकूल है वहां भ्रमण करने की। G20 का वहां समिट हुआ, और सबसे ज्यादा कामयाब, ये मैं नहीं कह रहा, जो विदेशी डेलीगेट आए उन्होंने कहा, DDC के चुनाव हुए, भारी संख्या में वहां मतदान हुआ। वो जमाना जाता रहा जब 10% मतदान होता था। अब ये तो सामने है, ये तो आंकड़े चढ़े हैं, ऑन रिकॉर्ड है। इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा, और मैं कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरी क्या मजाल कि मैं इतने सीनियर लोगों को खफा करूं। आई एम जस्ट रीडिंग आउट द फैक्ट्स विच आर रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड्स। सेंटर की स्कीमों का लगना अभी हुआ। योजना आयुष्मान, JNK इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी और फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विच हैज इंप्लीमेंटेड 100% यूनिवर्सल आयुष्मान। अब उन स्कीम में मैं नहीं जाऊंगा, गृह मंत्री जी के जवाब में आपको मिल ही जाएंगे। अब कश्मीरी आप गवर्नेंस की बात करते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, कश्मीर की छवि का कुछ नहीं था। इंटरव्यू की प्रथा मोदी जी ने जनवरी 1, 2016 में देश भर में समाप्त कर दी, ताकि सरकारी नियुक्तियों में, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि सरकारी नियुक्तियों में लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, क्योंकि ये शिकायत आया करती थी कि 100 अंक मिलते थे किसी को रिटर्न में, उसको फेल कर दिया जाता था इंटरव्यू में, और इंटरव्यू 100। जम्मू कश्मीर में ये कानून लागू हुआ राज्यपाल शासन लगने के बाद, नहीं लगाया गया 370 की आड़ में कि भाई अपने लोगों को कैसे हमने नियुक्तियां देनी है। ये एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। सेल्फ अटेस्टेशन अब वहां लगी, अब तो खैर और भी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। और कश्मीरी पंडितों की प्रतिनिधित्व को लेकर के ये बात है। आई थिंक आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ कोर्स वाज बिटवीन टू न्यूली आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, द बिगेस्ट exodus which has ever happened is Kashmir, and that too within the country, though it doesn't have the equal parallel with 1947, because that was partition resulting from the creation of a separate state. But here within the country, you had displacement of such a huge population, leaving their homes and hearths overnight. और अगर उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं, सामूहिक, कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, कांग्रेस क्यों ना हो, is it not our collective responsibility to restore that sanctity and that culture and tradition of Kashmir, for which Kashmir is known all over the world? And is that possible in the absence of Kashmiri Pandit? कश्मीरी पंडित की अनुपस्थिति में क्या वो कश्मीर की रिवायत और कश्मीर की तहजीब और संस्कृति, जिसके लिए कश्मीर दुनिया भर में जाना जाता है, तो अगर ये करा जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें आपत्ति क्या है? और बात आई लद्दाख की, जयमियांग जी ने बात की बहुत सारी स्कीम्स की, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात वो भूल गए, तो मैं जोड़ दूं कि सबसे पहली बार यूनियन टेरिटरी की मांग लद्दाख का एक डेलीगेशन लेकर के आया था दिल्ली में सन 1948 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिला। तब से लेकर आज तक 70 साल में गए, कई प्रधानमंत्री आए गए, कई सरकारें आई गई। शायद ये हमारी किस्मत में था, लद्दाख की किस्मत में था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और फिर लद्दाख की यूनिट। दिस इज द फैक्ट ऑफ हिस्ट्री, दिस कैन बी चेक्ड। तो दीज आर द पॉलिटिकल सीक्वेंस विच मेक्स अस बिलीव अदरवाइज। अब बहुत ज्यादा इसमें बात नहीं करनी है, लेकिन दादा ने अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के बाद जंग हुआ वहां पर, और अगर जैसे मैंने कहा कि सीरीज ऑफ नेहरूवियन एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन, अगर आकाशवाणी भवन जाकर के नेहरू जी यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर ना करते, बिना अपने मंत्रिमंडल से परामर्श किए हुए, तो आज ये पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता, भारत का हिस्सा होता, ये POJ के अलग ना होता। और आज गृह मंत्री को उनके लिए नॉमिनेशन सीट नहीं लानी पड़ती, जो आज इस विधेयक में आ रहा है ना कि but the archival documents which have been unveiled very clearly say that the military advice which Prime Minister Jawaharlal Nehru was receiving from his Commander-in-Chief and the General Staff was that the war has reached a stalemate, and so therefore there was no possibility of making any further gain, and that is why the ceasefire happened. And if you do not have faith in me,
You can Google a Guardian article which was published just about a couple of months back, citing the Nehru archives and citing the advice of the Commander-in-Chief of the Indian Army, who said that a stalemate has been reached and no further progress is possible, and that's why a ceasefire was called. Yes, I fully trust you. See, Dada, no, I'm not yielding. नहीं अभी नहीं. एक मिनट बात होने दो. ऐसा नहीं है. Manish ji, I fully trust you, but I am not allowing myself. I will not allow myself to get distracted by this tilted argument. The fact is that the head of government is Prime Minister, so it is the responsibility of the Prime Minister. हमने तो यही कहना ना कि प्रधानमंत्री ने जाके सीज फायर का घोषणा की. हमने ये नहीं कहना कि उसको रसोई घर में किसी ने सलाह दी थी या किसने दी थी या उसको कसूरवार ठहराएगी. The ultimate responsibility will lie on the head of the state and the first minister of the country. See what I am trying. See, देखिए मनीष जी, that subject will come up. No. See, that subject. Honourable Minister Yes. Diwari, So the entire country is watching this debate. Yes. We Thank should you. not shift the blame here and there. Thank you. Because these are all happened in the British rule. This matter will come up for discussion if tomorrow somebody decides to hold an investigation into why Prime Minister Nehru went and declared ceasefire. Then we can give this argument that so and so advised him, he was misguided, etc., etc. But the matter of fact is, as the whole world saw, it was Prime Minister speaking on the Akashvani. So that's what the entire world knows. Anyway. So I, therefore, not taking long. अब ये आ रहा है कि इलेक्शन बार-बार इलेक्शन आप क्यों नहीं करवा रहे? तो शुरू से ही ये वाक्य से शुरू हुआ. तो मुझे ये लगा कि ये सवाल ट्रेजरी बेंचेस से पूछा जा रहा है या इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है. You can ask election commission, but not here. हम तैयार हैं. भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 24/7 365 कोई भी चुनाव हो, पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हमारा कार्यकर्ता इस तरह सक्षम है, उसको रात को भी सोए हुए जगा ले तो उठ करके भारत माता की जय कह के निकल पड़ता है अभियान. हमारी तरफ से कोई इनकार नहीं. लेकिन जब उचित एक प्रणाली है, हम संवैधानिक संस्थाओं में दखल नहीं देते. पॉसिबली योर thought is conditioned by what the UPA was doing or what the Congress was doing. You were dictating the constitutional bodies. We do not. To hold election. Yes. So whenever why are you not hold? Yes, sir. Absolutely, sir. Whenever the election commission announces, we are ready. We are ready. We are ready, sir. We are ready. Honourable members, tomorrow, I think that tomorrow Home Minister is going to give reply. So, now I'm going to conclude. The legitimate questions were asked by Manish and you. I think that answer will be given by the Home Minister tomorrow. Yes. Prohibition, anything from this government part? No. Whether any prohibition that the government would not be able to persuade the election commission that the situation has come to such a pass that election needs to be held? Adir. Now I'm concluding. Minister is participating in the debate. The reply has to be given by the minister. Already questions were raised. Election Commission has its own mechanism of gathering inputs as per its requirement and then take a final call. So let's all of us trust the wisdom of Election Commission and not appear to be interfering in functioning. Maybe UPA was doing it, Congress was doing it, they think we also do that, but we don't. So I think at the end, अब ये कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन नहीं हो रही, संविधान नहीं लागू हो रहा, लोकतंत्र नहीं हो रहा, but we were the party which introduced 3-tier system in the. I am concluding by that. DDC का चुनाव पहली बार 65 साल के बाद, 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ, तो अब हुआ. आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले. तो वो उसमें क्या रुकावट थी? No sir, that's a fact. You didn't have Zilla Parishads before. Why? And the parties which were ruling were swearing by autonomy, were swearing by self-rule. So how can autonomy be conceivable unless it is autonomy at the ground? To me, to any student of democracy, the self-rule means rule of the ground, of the grassroots. Autonomy has to be born from the grassroots. So not autonomy of the family
or self-rule of the family. We have given true self-rule to Jammu Kashmir. We have given true autonomy to Jammu Kashmir. And therefore, please trust us. What happens in future also will be in the best interest of the people of Jammu and Kashmir. We are now heading into very crucial 25 years before we end up in 2047. And Jammu Kashmir has started discovering its unexplored resources. Today we have a huge lithium store which has been discovered in Riyasi. We have the highest railway bridge in Jammu and Kashmir of the world. We have the longest Asia tunnel, road tunnel, Chennai Nashri, which is named after Sama Prasad Mukherjee. We have the Purple Revolution, which is being talked over all over the world, born from Jammu and Kashmir, Gulmarg and Bhadrawa, the lavender. So many new avenues and resources which had remained unexplored earlier, thanks to Prime Minister Modi's drive, his push, and also the technology, that we are discovering that. And I'm sure in the next 25 years, when India reaches that pedestal which we have envisaged, Jammu Kashmir is going to add maximum value to achieve that target. So we have a very critical role, and I think I call upon all of us to become a party of that journey of ascent of India, of which Jammu and Kashmir is going to play a lead role. Thank you, Speaker, sir. Thank you. Shri Shirang Appa Bani.